Hello everyone. In this video we'll discuss the questions related to the simple interest. Let us look at the first question. What do you see here? In question number 1, a sum rupees 2000. A sum मतलब amount, okay? या पैसे, okay? A sum rupees 2000 is invested. अभी invested मतलब ये जो अमाउंट है ये जो पैसे है सम है ये प्रिंसिपल है विच इज़ 2000 इज इन्वेस्टेड एट 10%. सो रेट इज 10% पर एनम फॉर 2 years. मीन्स टाइम इज 2 or 2 years. What we have to find? We have to find the simple interest. So we know the formula of simple interest. It's PRT upon 100. Put the value. P is 2000, R is 10 and time is 2 upon 100. So 20 can be cancelled, and in this way 2 into 2 40 into 10 400. So option B, right? तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 खुद से कर सकते हैं. There is only calculation difference, otherwise it is same. Let us move to the type 2. We have to find the difference between CI and SI. Okay, we'll come back to this one little later. Let's find the amount. For sum, this is invested. Okay, so chaliye, let's calculate this one. A sum rupees 4000 is invested at 5%. Okay, per annum for 2 years. We have to find the amount. Okay, so here principal is 4000. Rate is 5%, time is 2 years upon 100. So 20 cancel. So it is 5 2s are 10, 400 rupees is the interest. Which interest? Simple interest. And how much is the amount? Amount is principal plus simple interest. जो amount होती है वो आपने कितने पैसे उधार लिए और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट हुआ, राइट? उसका टोटल मतलब होता है अमाउंट. यस, सो अमाउंट इन दिस केस इज 4400. अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये मेंशन नहीं किया, तो ऐसा अगर है तो आपने कंसिडर करना है इट इज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ओके, 6000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 1 year. फाइंड द अमाउंट. ओके, तो यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला लगेगा. सेम इज द केस विद दिस. अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रिंसिपल 2500, राइट, अर्न्स एसआई. एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट 500 इन 2 years. इन 2 years व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड अमाउंट. ओके, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करने नहीं है. देखो 2500 रुपये इंटरेस्ट पे दिए थे और 500 रुपये इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3000 रुपीज़. वेरी सिंपल. वाई? बिकॉज अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस एसआई. प्रिंसिपल इज 2500, एसआई इज 500 रुपीज़, सो विच इज 3000. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? नाउ द another type is we may have to find rate or time when the interest and amount is given or when the principal and amount is given. Okay, so let's look at the next question. Question number 7. Yes, what do you see? Can you read? A sum of rupees 2000 becomes 2400. मतलब आपने किसी से 2000 रुपये लिए और आज आपको वो 2400 रुपीज़ रिटर्न करने हैं. मतलब प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़. यस, अमाउंट है 2400, राइट? टाइम है 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट. सो जैसे सिंपल इंटरेस्ट दिखता है अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, PRT upon 100, राइट? बट हियर सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट नोन, तो वी मे हैव टू और वी हैव टू फाइंड फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट. कैसे निकलता है सिंपल इंटरेस्ट? देखो 2000 रुपये उधार लिए और वो 2400 हो गए, मतलब कितने रुपीज़ बढ़े? 400. सो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ A एंड P. ओके, सो 2400 minus 2000 which is 400, right? Put it here. 400 equals to principal is 2000, rate is not known, time is 2 years upon 100. 20 cancel, 20 into 2 40 हो जाता है. So 400 upon 40
is nothing but your rate, which is 10%. How much is the rate? 10%. I hope this is clear, right? Let us see in the next questions what they have given. 5% is the rate. Sum is rupees. A sum earns this much interest, and this is the time. This is the interest, yani ki simple interest, and this is the rate. What you have to find? You have to find the principal. Again, same formula. SI is equals to PRT upon 100. Correct? Simple interest is given 500. P is not given. R is 5%. T is 2 years upon 100. दोनों का 10 हो जाता है, 10 कैंसिल, राइट? सो प्रिंसिपल will become 5,000 rupees. कैसे? This 10 will be shifted to this side and multiplied. Okay. So this is how. Yes, sometimes you may have to find time, sometimes you may have to find rate. Okay, and sometimes you may have to find principal. Yes. Now let us move to the compound interest. So read the first question. 2,000 invested at 10%. Principal, rate, compounded annually, time 2 years. Amount we have to find. So we know the formula of amount in case of CI. P in bracket 1 plus R upon 100 raised to the power T. Okay, just simply put the values. Principal is 2,000. Okay, 1 plus rate is 10% upon 100 रेस्ट टू द पावर टाइम इज 2. सो 2000. अब देखिए ये 1 प्लस 10 अपॉन 100 क्या होता है. आप क्या करो, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, प्लस दिस 10 अपॉन 100 एज इट इज़. ये ऐसा कहीं तो भी आपने पढ़ा होगा. सो दिस इज 2000 एंड 110 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर 2. 2000. This becomes 1.1 square. How much is the square of 1.1? It's 1.21. मतलब 11 का स्क्वायर क्या है? 11 का स्क्वायर होता है 121. तो 1.1 का स्क्वायर क्या होगा? 1.21. नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई. अब आपको पता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस है तो ये 2 0 अगर कट होते तो ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. 20 इंटू 121 हो जाएगा. सो 121 इंटू 2, सो इट इज़ 2420. Am I right? So 2420. Option number C. This is how you can calculate amount using this formula. Remember, I guess same question is there, similar question is there, right? It is annually. Okay. Now moving back to the question given earlier, that is डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई. ओके, सो ऐसा क्वेश्चन 100% आ सकता है एग्जाम में. आपको ध्यान देना है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई. मतलब आपको सी आई भी निकालना पड़ेगा एंड एस आई भी निकालना पड़ेगा. देन यू कैन फाइंड द डिफरेंस. दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट, दिस इज टाइम. ओके, तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट एस आई, दैट इज पी आर टी अपॉन 100. सो 2000 10% टाइम 2 अपॉन 100. 20 cancel. 20 into 2 40 into 40 into 10 is 400. Correct? This is what simple interest. Now we have to find compound interest. Compound interest का formula तो है but we don't use it, right? So to find compound interest first we find amount. Okay, so what is the formula of amount? P in bracket 1 plus R upon 100 raised to the power T. Okay, principal is rupees 2000. राइट. 1 प्लस अभी देखा था हमने, 1 प्लस 10 अपॉन 100 क्या होता है? 110. ओके, सो 2000 इंटू 1.1 स्क्वायर, 1.1 स्क्वायर विच बिकम्स 1.21. 1.21. If you multiply, it is going to be 2420. राइट, चेक कर लेना कैलकुलेशंस वंस. ओके, 2420. सो दिस इज व्हाट द
amount. Okay, now you have to find the compound interest. Compound interest can be found by amount minus principal. 2420 minus principal is 2000. So 420 is the compound interest. Now how much is the difference? You have to calculate the difference. The difference is, which is the bigger one? CI is bigger, so CI minus SI, which is 420 minus 400. So you will get difference as rupees 20. I hope it is easy. Will you be able to try these two questions? Yes, and definitely there are some more types which are remaining from this chapter, from these concepts. Okay, that we'll be discussing in the next video. Thank you everyone for watching.